Hello everyone, good morning. Welcome to my channel. My name is Yasar Pusti. You are watching my lovely channel, Love You Science. So in this lecture, we'll discuss a very important property of Laplace transformation, which is effect of division by t. So what is that theorem? If Laplace of f of t is a function. If Laplace of f of t is f bar s, which is given, then Laplace of f of t by t is equal to integration from s to infinity f bar s into ds. ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है. Again I repeat, f of t is a function. If Laplace of f of t is equal to f bar s, then Laplace of f of t by t is equal to integration from s to infinity f bar s. मतलब we are dividing t. देखो effect of division by t. So let us take an example here. So let our we'll find out Laplace of 1 minus cos t by t. So tell me इसके साथ कंपेयर करो Laplace of f of t by t. देखो f of t क्या है इधर 1 by 1 minus cos t, मतलब f of t is equal to 1 minus क्या है cos t. तो इसके साथ एनालॉगस करो. Then we'll find out, we'll take Laplace of what? F of t first. मतलब we'll find out Laplace of f of t. That is Laplace of 1 minus cos t. Okay, here I'm writing in another page. Another page I'm writing example क्या है Laplace of 1 minus cos t by t. Okay, so here function is f of t क्या है इधर f of t is 1 minus cos t. So first we'll take Laplace of that function. Laplace of f of t क्या है मतलब Laplace of 1 minus cos t. So Laplace of 1 is 1 by s, Laplace of cos t is s by a square plus a square. a मतलब 1 square is 1. ठीक है, but we will find out Laplace of 1 minus cos t by t. So as per our definition, it will be what? F integration of that f bar s into ds. मतलब ये जो पार्ट है, मतलब ये जो पार्ट है, सॉरी 1 सेकेंड. ओके, ये जो पार्ट है that is called, that is your f bar s. So what is your final expression? इंटीग्रेशन फ्रॉम s टू क्या है इंफिनिटी, देन आपका f bar s इंटू डी एस. एस और नो? सो इंटीग्रेशन फ्रॉम s टू इंफिनिटी f bar s क्या है 1 by s by s स्क्वायर प्लस 1. ठीक है, इंटू डी एस. So Laplace integration of 1 by s into ds minus integration of s by s square plus 1 into ds. And limit क्या है s to infinity, s to infinity. So ये जो function का Laplace क्या है, the Laplace of this, sorry, integration of that function is ln s. Limit क्या है s to infinity and minus. So now integration of this part. ये part कैसे करोगे, देखो एक शॉर्टकट दे रहा हूं. देखो, let you have a function of fx and the differentiation of fx is f bar x. If integration of that f bar x by fx is equal to ln of fx. Example देखो, let we have a function of f of x is let x square plus 2. So what is f bar x? F bar x is 2x. ठीक है, so if मतलब इंटीग्रेशन ऑफ 2x by x square plus 2 is equal to ln x square plus 2. Again I repeat, fx is x square plus 2 and f bar x is क्या है 2x. So if you divide fx, if you take the integration of f dash x by fx, देखो 2x by x square plus 2, your final answer will be ln x square plus 2. ठीक है, देखो और एक एग्जांपल देखो, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा. मान लो कि यू हैव ए फंक्शन ऑफ f of x is like x square plus 2. ठीक है, and okay, if a function is like this, like x by x square plus 2 इंटीग्रेशन, मतलब ये आपका fx है, बट f bar x, fx क्या है x square plus 2, बट f bar x क्या है 2x, बट न्यूमरेटर में क्या है x है, तो इसलिए इसमें 2 मल्टीप्लाई करो 2 डिवाइड करो, आंसर मिल जाएगा.
देन ये पार्ट का इंटीग्रेशन क्या है, ये पार्ट का इंटीग्रेशन ln x square plus 2. ठीक है, सो आई होप इट इज क्लियर. Okay, now same concept you apply here. So a square plus 1 is, let it be fx. Okay, so but here it is s, so better you do one thing, 2 multiply करो 2 divide करो. So ये अगर square plus 1 is fx, then 2s will be f bar x. मतलब your answer is ln s square plus 1, sorry 1 by 2 ln s square plus 1. Then limit क्या है, s to infinity. So now you take half as common, so it will be 2 ln s minus ln s square plus 1. Okay, then limit is from s to infinity. So now I can write down, so I can write down half ln s to the power 2 minus ln s square plus 1. So now ln a minus ln b क्या है, ln a by b. ठीक है, so I can write here, मतलब half ln s square by क्या है, s square by s square plus 1, s square plus 1. ठीक है, एंड लिमिट क्या है, s to infinity. यहाँ तक क्लियर, यहाँ तक क्लियर. देन ये हो गया क्या है, लैप्लेस ऑफ 1 माइनस cos t बाई क्या है 2. देन यू कैन सॉल्व, इसमें इंफिनिटी पुट करो, इसमें s में इंफिनिटी पुट करो, क्या होगा लॉन इंफिनिटी, इसमें इंफिनिटी इंफिनिटी, लॉन इंफिनिटी बाई इंफिनिटी कितना क्या है 1, मतलब लॉन 1 इज 0. अरे देखो इसमें कैसे करना है, ln s में इंफिनिटी डाल दो, so मतलब ln इंफिनिटी बाई इंफिनिटी, ये इंफिनिटी ये भी इंफिनिटी. ठीक है, सो माइनस ln ऑफ s डालो, इसमें क्या है s स्क्वायर बाई s स्क्वायर प्लस 1. एस और नो, इंफिनिटी बाई इंफिनिटी क्या है 1, सो मतलब लॉन 1 इज 0 माइनस ln s स्क्वायर बाई s स्क्वायर प्लस 1. लॉन 1 क्या है 0 है, तो 0 माइनस ln s स्क्वायर बाई s स्क्वायर प्लस 1. सो योर फाइनल आंसर क्या आ रहा है, माइनस हाफ ln s स्क्वायर बाई s स्क्वायर प्लस 1. अगर माइनस साइन ओमिट करोगे देन क्या हो जाएगा, ln s स्क्वायर प्लस 1 बाई s स्क्वायर. होप इट इज क्लियर. सो दैट इज योर फाइनल आंसर. और एक एग्जांपल देखो, लैप्लेस ऑफ sin square 2t upon t. See, here our function is sin square 2t, मतलब ft is sin square 2t. Okay, first we will take Laplace of f of t, मतलब Laplace of sin square 2t. ठीक है, you know sin square theta is equal to 1 minus cos theta by 2. So if it is sin square 2t, then क्या होगा 1 minus cos into cos 2t upon 2, right? So it will be 1 minus cos 4t by t. So here I can write Laplace of 1 minus cos 4t by 2. ठीक है, okay, now we'll take half to constant बाहर ले, Laplace of 1 minus Laplace of cos 4t. So Laplace of 1 is 1 by s minus Laplace of cos 4t is, Laplace of cos 8 is s by s square plus s square, मतलब it is s by s square plus s square, a is 4 मतलब 16. ठीक है, so now you are getting Laplace of ft as 1 by 2 whole into 1 minus s by s square plus 16. That is called f dash s or fs.
but we need to find out Laplace of this function. मतलब we'll have to find out Laplace of sine square 2t upon t. Then as per the theorem, division theorem, if you divide t to this function and you will take Laplace of that, your answer is integration from s to infinity f bar s into ds or fs into ds. ठीक है, see fs and f bar s no difference. ये मतलब Laplace of f of t is f bar s. So here f bar s क्या है, ये पार्ट है. So मतलब इंटीग्रेशन फ्रॉम s to infinity 1 by 2 under bracket 1 by s by s square plus 16, ठीक है, into ds. Now we'll integrate this function. तो इसमें देखो हाफ तो कांस्टेंट है, then integration of what 1 by s into ds minus integration of s by s square plus 16 into ds. ठीक है, इसके लिए मैंने अभी एक ट्रिक दिया था, इसमें काम करो 2 मल्टीप्लाई करो 2 डिवाइड करो. ठीक है, सो अगर ये होगा आपका एफ एक्स, सो ये पार्ट क्या होगा एफ डैश एक्स. सो ये कंप्लीट पार्ट का इंटीग्रेशन क्या होगा ln ऑफ s स्क्वायर प्लस 16 एंड इसका इंटीग्रेशन क्या है, इसको ब्रैकेट दे दो. ठीक है, सो नाउ इसका तो ln s और log बेस ऑफ ई एस. ठीक है, माइनस ये क्या है हाफ तो कांस्टेंट है, सो ये जो फैक्टर ln s स्क्वायर प्लस 16. ठीक है, सो now we can do one thing. If I multiply 2 and divide 2, so here I can do, or if I take half as common from this side, so it will be, here I am writing, see here, just a minute. Okay, so here, so half, then you take half as common, so it will be what 2 ln, हाफ इधर से कॉमन ले जाओ मतलब क्या होगा 2 ln s माइनस ln s स्क्वायर प्लस 16. गेटिंग माय पॉइंट, मतलब here I have taken half as common, so it will be 2 ln s minus ln s square plus 16. So it is 1 by 4. So this one I can write down ln s power 2 minus ln s square plus 16. So here we can apply one theorem, ln x minus ln y is ln x by y, मतलब ln s square by s square plus 16. ठीक है, then always you put limit. limit क्या था s to infinity, s to infinity. here also apply करो s to infinity, s to infinity. ठीक है, I hope it is clear. so now इसको सॉल्व करो 1 by 4, इन्फिनिटी इसमें डालो s में डालो, तो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी मतलब ln इन्फिनिटी बाई ln इन्फिनिटी माइनस s में s डाल दो ln s स्क्वायर बाय s स्क्वायर प्लस 16. ठीक है, ये क्या हो जाएगा 1 बाई ln ऑफ 1 माइनस ln s स्क्वायर बाय s स्क्वायर प्लस 16. सो ln 1 इज 0. ठीक है, so your final answer will be, here I am writing, your final answer is coming, यहाँ से देखो 1 by 4 0 minus of ln s square by s square plus 16. ठीक है, so final answer is minus 1 by 4 ln s square by s square plus 16. if और माइनस हटाना चाहते हो देन ये क्या हो जाएगा 1 by 4 ln s square plus 16 by s square. so that is your final answer. ठीक है, so next question, Laplace of
let 1 minus cos t by t square. इसको कैसे सॉल्व करें? Laplace of 1 minus cos t by t square. So here we'll have to apply that property, division property 2 times. क्यों? देखो ये फंक्शन क्या होगा 1 minus cos t by क्या है t into t, मतलब दो बार डिवीजन का फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा. 2 times you need to apply that division theorem. So इसलिए बेस्ट वे फर्स्ट टू डिफाइन ft. ft इधर क्या है 1 minus cos t, फर्स्ट फंक्शन. ठीक है. So first you take Laplace of ft. Laplace of ft क्या है? Laplace of 1 minus cos t. ठीक है. Laplace of 1 minus cos t क्या है? Laplace of 1 is 1 by s minus Laplace of cos t is s by s square plus s square. a is 1 मतलब 1. ठीक है. ये हो गया क्या है? Laplace of f of t, जिसको हम लोग डिफाइन किए f bar s. ठीक है. So now if we take Laplace of 1 minus cos t by t, then as per the division formula, as per the division rule of Laplace transformation, क्या आंसर होगा? इंटीग्रेशन फ्रॉम s to infinity f bar s into ds. ठीक है. ये क्या है देखो, here I am writing just wait. इसमें क्या होगा? ये पार्ट इधर लिख रहा हूँ, मतलब इंटीग्रेशन फ्रॉम s to infinity f bar s into ds. so f bar s क्या है? ये वाला पार्ट, मतलब इंटीग्रेशन ऑफ 1 by s minus 1 by s square plus 1 into ds, and limit is from s to infinity. Then 1 by s into ds integration minus integration of 1 by s square plus 1 into ds. ठीक है. इसका इंटीग्रेशन क्या है? ln s minus. So here what is the integration of this one? तो इसमें मैंने क्या बोला था? इसको s is there ना, अब s is there, here s is there, मतलब इधर s है, इधर भी s. ठीक है. तो इसका इंटीग्रेशन कैसे करना है? मैंने हाफ डिवाइड करो, हाफ मल्टीप्लाई करो. ठीक है. ये जो पार्ट का इंटीग्रेशन क्या होगा? मैंने बोला था ये जो पार्ट का इंटीग्रेशन किया जाए, ये अगर एक फंक्शन होगा इसका डिफरेंशिएशन, मतलब फाइनल इंटीग्रेशन आंसर क्या होगा? तो ln s माइनस हाफ, इसका आंसर क्या होगा? ln s स्क्वायर प्लस 1. यहाँ तक क्लियर? I think it's clear. Then we can take half as common. Then either I can write down 2 ln s minus ln s square plus 1. Okay. So half, here I can write down ln s power 2 minus ln s square plus 1. ठीक है. So ये ln x minus ln y क्या होगा? ln x minus y. So half क्या होगा? ln s square by s square plus 1. हाँ, सब में क्या डालना है? लिमिट डालना है s to infinity. तो इसमें देखो हाफ, इसमें इंफिनिटी डालो, so ln infinity by infinity minus ln s square by s square plus 1. so ln infinity by infinity 1, so ln 1 minus ln or ln s square plus 1. ठीक है. ln 1 is 0, मतलब 0 minus this one. ठीक है. so your final answer will be half, मतलब Laplace of which one? 1 minus cos t by t, you are getting as कितना? ln s square plus 1 by s. ठीक है. नेगेटिव हटा दिया तो ये उल्टा हो गया. ठीक है. तो मतलब ये क्या मिला? ये मिला हमें Laplace of क्या 1 minus cos t by t. ये हमें अभी मिला, क्या मिला? आंसर क्या है? आंसर हाफ ln, मतलब हाफ ln s square plus 1 by s square. चेक करते हैं, square plus 1 by s square. ठीक है. but we will find out what Laplace of 1 minus cos t by t square. मतलब again we have to apply division formula. ठीक है. understood?
So as per the division formula, as per डिवीजन रूल, ये क्या होगा, इंटीग्रेशन फ्रॉम क्या है एस टू इंफिनिटी एफ बार एस इंटू डी एस, ठीक है. सो एफ बार एस इज व्हाट, दिस वन इज योर एफ बार एस, you already have taken the Laplace. So मतलब इंटीग्रेशन फ्रॉम एस टू इंफिनिटी ये क्या है, हाफ इंटू ln a square plus 1 by s into ds, ठीक है. Now we'll integrate this one. So I can take half as common, then ln a square plus 1 by s into क्या है ds. I think it is a square and this is a square. हाँ ठीक है. So now we'll integrate this one to get that answer. ये इंटीग्रेशन कैसे करना है, ये बाय पार्ट सप्लाई करो, मतलब here I can take ln a square plus 1 by a square, ये एक फंक्शन है, मल्टीप्लाई करो 1, ठीक है. तो इसमें you consider this one as u and this one as v. So you know integration of uv का फॉर्मूला क्या है, u इंटीग्रेशन ऑफ v, ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन अंडर ब्रैकेट डिफरेंशिएशन ऑफ u into इंटीग्रेशन ऑफ v, that you know. Okay, same thing apply for इधर. Here I'm writing what I'm doing. Let me erase and you can get the answer. Okay, ये बाय पार्ट अप्लाई करो, मतलब हाँ u is कितना है ln s square plus 1 by s square, ठीक है. इंटीग्रेशन ऑफ v, v मतलब 1 का इंटीग्रेशन क्या है s, ठीक है, ds का इंटीग्रेशन s माइनस देन इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ u, इसका डिफरेंशिएशन मतलब v by ds of ln s square plus 1 by, मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ दिस वन into integration of v is 1, so 1 का इंटीग्रेशन क्या है s, 1 into s integration is s. है तो क्लियर, ब्रैकेट, ठीक है. so I can write s into ln s square plus 1 by s square, ये पार्ट लिख लिया, माइनस ये पार्ट का डिफरेंशिएशन क्या है, ये पार्ट का डिफरेंशिएशन चेक करो, कौन सा पार्ट का देखो, ये पार्ट का डिफरेंशिएशन चेक करो, ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑफ दिस पार्ट. So d by ds of ln s square plus 1 by s, थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है बट उतना थोड़ा मेथड फॉलो करना है. इसका डिफरेंशिएशन क्या है, 1 by this one s square plus 1 by s square, ये हो गया ln of x का डिफरेंशिएशन इनटू, फिर से यू टेक डिफरेंशिएशन ऑफ दिस पार्ट, मतलब d by ds of s square plus 1 by s square. बेसिक से एकदम जा रहा हूँ, एकदम बेसिक पे जा रहा हूँ, ठीक है. तो ये क्या हो जाएगा s square by s square plus 1 into, इसमें डिफरेंशिएशन ऑफ u by v मेथड को करो, डिफरेंशिएशन फर्स्ट इनटू सेकंड कांस्टेंट, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन क्या है 2s इनटू सेकंड कांस्टेंट, ओके, माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट हो गया, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड इनटू फर्स्ट कांस्टेंट by the square of denominator which is s by 4, मतलब हो गया yes or no. So it is s square by s square plus 1, so 2s cube minus 2s cube minus 2s, right, by s to the power 4, ये मतलब ये square हो गया, ये पार्ट तो कैंसिल हो जाएगा. So final answer is coming minus 2s by s square plus 1 into s square, इसमें भी कैंसिल हो जाएगा, so minus 2 by s square plus 1.
ओके, ये हो गया आपका मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ दिस पार्ट। इसमें कैन राइट डाउन इंटीग्रेशन ऑफ इसका पार्ट क्या है -2 बाय एस इंटू एस स्क्वायर प्लस 1 इंटू एस। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। इंटू डी एस क्योंकि हमें इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। सो लेट मी दिस see integration part is your job that you have to do. Still I am doing. Okay, so I can write half into s ln s square plus 1 by s square minus देखो s s cancel माइनस माइनस प्लस हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 2 देखो 2 तो कांस्टेंट मतलब इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय s स्क्वायर प्लस 1 इनटू ds। ठीक है, okay, we have to integrate this one. एक फॉर्मूला याद रखो इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय x स्क्वायर प्लस s स्क्वायर। देखो ये अगर ऊपर 2s होता देन वी वुड हैव टू टेक दैट ln ऑफ s स्क्वायर प्लस 1 बट ऊपर s फॉर्मेट में नहीं, ऊपर एक कांस्टेंट है। सो वन फॉर्मूला रिमेंबर इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय x स्क्वायर प्लस s स्क्वायर 1 बाय a tan इनवर्स ऑफ x बाय a। ठीक है, तो इसमें x क्या है x is s and a is 1। सो ये पूरा आंसर क्या मिलेगा मतलब ये इंटीग्रेशन ऑफ दिस पार्ट क्या मिलेगा 1 by a मतलब 1 by a is 1 tan इनवर्स x is s by 1 मतलब मिलेगा ओनली tan इनवर्स s। ठीक है, सो आई एम राइटिंग हियर हाफ s ln s square plus 1 by s square plus 2 in this place you write tan inverse s। I think it is clear। okay then इसमें देखो इसमें हमेशा लिमिट क्या है लिमिट था s टू इंफिनिटी। देखो हियर tan इंफिनिटी माइनस tan s तो इसमें अगर लिमिट डालेंगे tan इंफिनिटी इज व्हाट पाई बाय 2। सो मतलब ये आंसर क्या हो जाएगा पाई बाय 2 माइनस tan इनवर्स s। ठीक है, ये पार्ट देन इसमें भी सेम थिंग s into ln s square plus 1 by s square। सो ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। इसमें भी लिमिट डाल दो s में क्या होगा इन्फिनिटी देन s में s। ठीक है, सो आई थिंक ये पार्ट यू सॉल्व इट। ये बहुत लेंथी हो गया कैलकुलेशन। सो नाउ आई विल गो फॉर द डेरिवेशन पार्ट। मतलब we'll have to prove if Laplace of f of t is f bar s, then prove that ये जो थ्योरम है जो प्रॉपर्टी दैट विल हैव टू प्रूव दैट Laplace of f of t by t is equal to integration from s to infinity f bar s into ds। that will prove। okay, so how to prove it? So we'll start from the RHS side। RHS side क्या है s to infinity f bar s into ds। what is f bar s? f bar s is Laplace of f of t मतलब integration from s to infinity then Laplace of f of t। ठीक है, into ds। right now what we'll do ये जो पार्ट है as per the definition of Laplace क्या डेफिनेशन है Laplace का इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to infinity e to the power minus st into that factor ft into dt। yes or no? okay, मतलब ये हो गया कंप्लीट पार्ट। जस्ट अ मिनट, मतलब ये हो गया कंप्लीट पार्ट इनटू क्या है ds है ये पूरा का इंटीग्रेशन फिर से करना पड़ेगा। सो देन व्हाट यू विल डू
So here we are in internal part में क्या है, we are integrating that function with respect to t, and to finally we'll have to integrate the entire function with respect to ds. So you know how to solve it, how to integrate this function from class 12th. You can interchange that integration by interchanging ds and dt. मतलब इसको यहाँ रखो, इसको यहाँ रखो, और ये पार्ट भी इंटरचेंज कर दो. ओके, लेट मी, मतलब ये पार्ट को चेंज करो, ये पार्ट को इधर रखो. सो ये पार्ट को इधर रखो, ये पार्ट को उधर रखो. ठीक है. सो देखो, फर्स्ट इज इंटीग्रेशन क्या होगा, 0 टू इंफिनिटी, देन स्क्वायर ब्रैकेट, देन 0 टू, ओके मैं कलर चेंज कर रहा हूँ. ओके, इंटीग्रेशन क्या है, एस टू इंफिनिटी, एस टू इंफिनिटी, इसको इंटरचेंज कर दिया. देन आई एम राइटिंग e टू द पावर माइनस एस टी एफ टी इंटू डी टी. देन ब्रैकेट एंड किया ना, डी टी, इसको डी एस कन्वर्ट करो, सॉरी, मतलब डी एस, देन ब्रैकेट एंड करो डी टी. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? जस्ट मैंने इंटरचेंज किया और कुछ नहीं किया. देन देखो इसको कैसे करना है. इफ आई इंटीग्रेट दिस फंक्शन e टू द पावर माइनस एस टी इंटू एफ टी डी एस, मतलब वी आर इंटीग्रेटिंग दिस फंक्शन विथ रेस्पेक्ट टू डी एस. सो इधर we can take ft as constant, मतलब 0 to infinity then s to infinity. so ये जो f of t part है ये constant है, f of t part is constant, मतलब e to the power minus st into ds इसका इंटीग्रेशन. ठीक है. so now 0 to infinity then f of t, ठीक है, then sorry not integration, इसका इंटीग्रेशन क्या है, e to the power minus st by, we are integrating with respect to s, मतलब ये क्या होगा, minus t. carefully see, we are integrating e to the power minus st with respect to ds, मतलब ये आंसर क्या होगा, e to the power minus st by minus t. ठीक है, into dt. इधर एक लिमिट भी है, देखो ये लिमिट क्या था, s टू इंफिनिटी, मतलब s टू इंफिनिटी. तो इसमें हम लोग अप्लाई करेंगे, इसमें लिमिट डालेंगे s टू इंफिनिटी, मतलब s टू इंफिनिटी. ठीक है. सो फाइनल आंसर इज 0 टू इंफिनिटी. तो ये पार्ट को अगर सॉल्व करोगे, देखो ये एफ टी एंड माइनस टी, ये तो कांस्टेंट है, तो लिमिट इसमें डालना है, e टू द पावर एस टी एस इंफिनिटी, बिकॉज वी आर इंटीग्रेटिंग विथ रेस्पेक्ट टू डी एस, एस जगह में डालना है. ठीक है, इनटू डी टी. सो हियर आई एम राइटिंग लास्ट पार्ट, मतलब आंसर क्या होगा, एफ ऑफ टी बाय माइनस टी. तो इसमें क्या होगा, e टू द पावर माइनस इंफिनिटी बाय माइनस e टू द पावर माइनस एस टी. ठीक है. ओके, 0 टू इंफिनिटी. क्लियर. देखो 0 टू इंफिनिटी देन एफ टी माइनस टी इंटू इसमें डालो, सिंस वी आर इंटीग्रेटिंग विथ रेस्पेक्ट टू डी एस, तो s में इंफिनिट डालो, s में s डालो. सो इट इज e टू द पावर माइनस इंफिनिटी बाय माइनस e टू द पावर माइनस टी. सो मतलब ये क्या हो जाएगा, एफ ऑफ टी माइनस टी e टू द पावर इंफिनिटी 0 माइनस माइनस टी. ठीक है. वी आर इंटीग्रेटिंग दिस वन फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी. सो ठीक से चेक करो, माइनस माइनस तो कैंसिल हो जाएगा, टोटल टर्म प्लस हो जाएगा. सो आई कैन राइट डाउन e टू द पावर माइनस एस टी इंटू एफ टी बाई टी. ठीक है, e टू द पावर माइनस एस टी, सॉरी मैंने लिखा एफ ऑफ टी बाई टी, माइनस माइनस कैंसिल हो गया. देन उससे पहले मैंने लिखा e टू द पावर माइनस एस टी इंटू डी टी एंड इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी. देन एज पर द थ्योरम, एज पर द लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन बेसिक्स क्या है, इसको एक फंक्शन एज्यूम करो, जस्ट अ मिनट, इसको एक फंक्शन एज्यूम करो. ठीक है. सो मतलब क्या होगा, इसका क्या होगा, ये तुम्हारा लैप्लेस ऑफ क्या है, एफ ऑफ टी बाई टी, एज पर द डेफिनेशन ऑफ लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन. क्लियर. ओके,
Hope you guys understood what I've explained today. So with this, I'm ending this lecture. Thank you so much for watching my video. Thank you.